Okay, so I'm live again. Um, okay, yes. So, आज we're gonna do the PYQs. This is my response sheet, and there are some questions that we've already done, but ये मेरी response sheet है. The questions I got and the answers I give. ठीक है? I hope that this will give you a better clarity. और मैं ये करते हुए आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था when I was doing this and what was my strategy, um, how was I attempting questions, and what was going on in my mind. But live है कि नहीं है मुझे नहीं पता. Okay, yes, I'm live. Live है. चलो, let's wait for one or two more people to join. है ना. अभी पता नहीं बार बार लाइव अनलाइव हो रहा था. आई मीन बंद हो रहा था फोन, लैपटॉप सॉरी, एंड स्ट्रीम बंद हो रही थी फिर उसके बाद. बट नाउ आई बिलीव दैट आई एम लाइव एंड as we do, we wait for some time. We'll wait for some times and then we will do PYQs and we will complete the biotech wala topic. And we need to do जल्दी जल्दी अब, because अब जल्दी जल्दी पढ़ना है ना. तो हम रिविजन जल्दी जल्दी करेंगे, PYQs में ज़्यादा टाइम लगाएंगे बिकॉज तुम्हें PYQs से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना. रिविजन तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन एज वेल, एंड प्लस आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू. एंड इतने अच्छे से रिविजन मैं नहीं करवा सकती हूँ बिकॉज मैंने खुद पढ़ा है 2 साल तक, खुद मैं यूट्यूब पे देख के रिवाइज कर रही थी. सो आई डोंट थिंक सो आई माइट बी द रियली राइट पर्सन. उसके लिए यू कैन अवेल द क्रैश कोर्सेज, right, that ExamFactor has. And if you want some questions, you can do the mock test. So we'll do the PYQs.
लेट्स टेक 1 more minute. 20 पे स्टार्ट करते हैं. Yes, okay, so let's start. So before starting, I'm just gonna introduce myself. I am Aarushi Anand and I am from Hindu College and I'm currently doing BSc Zoology. I gave my CUET exam in 2023 and I scored 100 percentile in three subjects, which is bio, psychology, and English. I also scored 99.8 percentile in chemistry and a similar percentile in physics. So, like I said before, also that there is a mock test series of exam factors which is available on their website, and it's available for the subjects mentioned on your screen: accounts, business studies, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, geography, pol science, psychology, English, and general test. So basically, it's very important to do mock test because you need practice. The more you practice, the more are your chances to ace this exam. And practice is also necessary to manage time, because it's a time bound test. So you have to manage your time accordingly. Then, like I said, it's there's a crash course which is like it's gonna be like एक particular chapter का one shot video होगा, है ना? तो वो one shot video you can see and you can revise. हम भी मतलब रिवाइज कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना? एंड वी विल डू ओनली थोड़े बहुत टॉपिक्स. सो इट्स लाइक इतनी कम टाइम पे इतना सा ब्रश अप नहीं हो सकता, बट हियर यू कैन गेट डिटेल्ड एंड इन डेप्थ वीडियोस और ऑफ द चैप्टर्स, है ना? एंड इट्स गोना बी बेस्ड ऑन द CUET करिकुलम एंड CUET के हिसाब से होगा. So it's also available for accounts, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, pol science, English, and general test. And general test ka, I would suggest you guys to take the crash course or the mock test because it's something new and it's something that you don't do really often. So it would be beneficial to you. Okay, so these are some questions that we already did, but आज हम ये नहीं करेंगे. आज I'm going to show you something new. तो मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को response sheet दिखाई थी कि how is a response sheet. And today also I'm going to show you a response sheet. This is my response sheet. ठीक है? यहाँ पे ना you can also see choose an option, and you can see I've chosen none because उस time पे I was really confused in this question, but ये question हमने भी discuss किया था. ठीक है? So it says the first instance of construction of an artificial recombinant DNA molecule was carried out on the plasmid of this. We did yesterday also. We completed the whole biotechnology chapter, the first chapter, not the applications one. ठीक है? We did that. So उसमें हमने किया था um, this question, right? So the I told you that this might be a little tricky one for you, and it was for me definitely. That's why I did not choose any option in my exam. So I assume that all of you know that there are 50 questions in total, and out of which you have to do 40 questions, है ना? So uh, that's the thing. So you have an option to leave 10 questions, and it's up to you which questions you want to leave. So I was pretty confused in this one. So we did this question ka answer. The answer for this is Salmonella typhimurium. So if we do na कि plasmid किसका था, तो Salmonella typhimurium का था. And if we see कि recombinant transformation किस में हुई थी, तो that was Escherichia coli. ठीक है? It's very closely related to Salmonella typhimurium. ठीक है? नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस. ये वाला क्वेश्चन हमने पीपीटी में भी डिस्कस किया था, एंड जब आया था तो उसके बाद मैंने बोला भी था कि दिस इज समथिंग दैट केम इन माय क्वेश्चन माय पेपर एज वेल. ठीक है? सो वही PYQs ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो यू अंडरस्टैंड कि वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ PYQs, वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ
you know, there is not no बाइबल फॉर सीयूईटी, है ना? जैसे हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो सैम्पल पेपर्स, वी डू अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स. इवन द क्वेश्चंस दैट कम इन सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी टीचर्स बहुत एम्फेसाइज करते हैं उस फैक्ट पे कि this came in CBSE sample paper last year, or this question was a PYQ, because there's a wide variety of it. There's a बहुत सारे but since CUET is a very new concept, CUET is something very very new. There are not much options for you, ठीक है? एंड आपको ना सबसे अच्छे से दो चीज़ें करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी और क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एंड मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी एंड मॉक टेस्ट. इन दोनों चीज़ों के अलावा यू डोंट have any option. There is no other chance to ace CUET other than these two things. Okay. So yes, this was then again the second question जो मैंने discuss कर लिया था. Now this is the third question. Select the hormone which is not secreted by human placenta, and the answer for that is luteinizing hormone, of course, because LH is a anterior pituitary organ, so it cannot be released by human placenta. Whereas estrogen, progestogen, not progesterone, progestogen, ठीक है, human chorionic gonadotropin, and HPL, which is human placental lactogen, right? These are the hormones which are secreted by placenta, and there is one more hormone which is produced by ovary, which is relaxin. And for that I told you a trick as well. Relax, don't worry. Relaxin is a hormone of ovary. Relax, don't worry. That was the trick. Okay, then this was also a question that we did. अब we actually do questions बार मतलब repeat तो हम कर ही लेते हैं, revise तो हम करते रहते हैं, तो I don't think so I should do it again. If you guys want, मतलब तुम क्वेश्चंस देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोस, है ना? उसमें सारे क्वेश्चंस हो रखे हैं. दिस आल्सो वी डिड, एंड दिस आल्सो वी डिड, दिस आल्सो वी डिड. यस, ओके. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट यू गाइस टू आंसर. ठीक है, एक बार इसको पढ़ा कर लेती हूँ, वरना तो मैं आंसर दिख जाएगा. हाँ. So this is the question, question number 9. Out of following plants, which one is not browsed by cattle? Option A is wheat, option 2 is cowpea, option 3 is sugarcane, and option 4 is calotropis. So fatafat answers in the chat if you guys are there. Otherwise, if you're watching the recorded video, just I'm giving you time to think about it. एंड मुझको ये भी बताना कि किस चैप्टर से है क्वेश्चन. Okay, so I always give you a minute, so I'm gonna give you a minute to think about this. एंड देखो, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ये मत सोचा करो कि हमने क्वेश्चन कर लिया, आंसर मिल गया, लाइक चलो लेट मी ब्रेक दिस आउट, लाइक आंसर बता देती हूँ. सो आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द आंसर इज कैलोट्रोपिस. ठीक है, whenever you do a question, it is a chance for you to revise that topic, revise that question. अपने दिमाग में कैलोट्रोपिस से रिलेटेड जो भी आ रहा है ना, वो सब लेके आओ. That calotropis, why cattle does not it's not browsed by cattle. The reason is because it contains highly poisonous cardiac glycosides. ठीक है, बुक में लिखा है exactly highly poisonous cardiac glycosides. So you should remember this term exact as it is. ठीक है, and what why because हमने हर्बीवोरी को भी एज अ प्रेडेशन पढ़ा था. हमें लगता है कि शेर ने मतलब a lion ate a deer, that's predation. ठीक है, but also
herbivores eating plants, in fact, you know, a deer eating plant or a cow eating plant, cattle eating plant, it's also a sort of a predation or at an ecological level. It's written in the book, right? So calotropis use this as a defense mechanism, like it's a defense against predation, against herbivory. So it contains highly poisonous cardiac glycoside so that cattle cannot destroy the calotropis plant or the calotropis species. And I hope it's clear to all of you. Right? I believe it's clear. है ना? I'm gonna give you a minute if something's not clear so you can tell in the chat. Okay. So let's move ahead now. ये हमने discuss कर लिया था which of the following is not a Mendelian disorder. It's Down syndrome because it's a chromosomal disorder. It's trisomy of chromosome number 21. And as you can see, I answered this question. And a natural interconnection of food chain is 3. As you can see, I answered this question. And this question also we did. ठीक है, इसका आंसर is 4 A C B D. एक बार इसको कर लो आप चेक एज इन क्रॉस चेक कर लो कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है. किया है सही. Did I do this answer correctly? Anyway, okay, चलो मान लेते हैं करेक्ट किया था क्योंकि मार्क्स आ गए फुल. So it says again, this question also we've done, but वाओ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगी और मैंने सही किया होगा. एनीवे, इस क्वेश्चन का एक बार आंसर बता दो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. Although we discussed this, but it's a little tricky question and it's a little confusing question, तो इसलिए मैं बस रिवाइज करा रही हूँ. बाकी हम नीचे तो जा ही रहे हैं न्यू क्वेश्चंस करने के लिए, तो ऐसा मत सोचो कि हम बार बार रिपीट करते रहते हैं. We do new questions, we do new topics also, we discuss topics also, like yesterday we did biotechnology, right? I know थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है बिकॉज देखो पी वाई क्यूज लेते हैं और स्पेसिफिकली पी वाई क्यूज करा रहे हैं हम यहाँ पे आपको, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल. एंड जितना रिवाइज करोगे, जितना दिमाग में बैठ जाएगा ना कि हाँ ये पी वाई क्यू में आया था, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए ऑनेस्टली. Okay, so I see some people joining. I actually what we are doing is question number 13 का तुम्हें आपको आंसर बताना है. ठीक है, then I'll tell you what was the answer. And for the record, this is my response sheet. This is the questions that came in my CUET exam as it is. And इसमें मैंने क्या आंसर किया था वो भी as it is लिखा है. और मैं नीचे जाके तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी दिखाऊंगी. I mean पेपर. चलो okay. I'm gonna break the ice. मैं बता देती हूँ. The answer for this is option 3, Acetobacter. ठीक है, so basically Acetobacter acetate is it produces acetic acid. And बाकी सारे जितने भी है Acetobacter, Oscillatoria and Nostoc. Oscillatoria and Nostoc is cyanobacteria, and Acetobacter is a free living bacteria in free living organism in the soil, bacteria which fixes nitrogen, right?
This also we did. The answer for this is the answer for this is Indo-Burma plains. वाओ, मेरे को अपने क्वेश्चन देख के लग रहा है कि मैंने आंसर किए हैं, मेरे को आते थे. ओके, दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड. ये तो बहुत इजी था. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज phenylketonuria. Pedigree analysis is family tree over generations. Thalassemia is a blood disease, and trisomy of 21st chromosome is Down syndrome, as we discussed. ठीक है, freshwater animals. What happened? Freshwater animals cannot live in the seawater because of osmotic problems. Which of the following is not a cyanobacteria? Okay, tell me this. मुझे खुद भी नहीं हो रहा. मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, मुझे अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह. देखो, ये तो हमें मानना पड़ेगा, सीयूईटी का पेपर आता तो ईजी है ना. लेकिन सीयूईटी के पेपर करना बहुत ट्रिकी होता है. जब पेपर इजी आ रहा है, देन यू शुड आल्सो गेट फुल मार्क्स. नो, यू शुड आल्सो गेट 100%. वरना you'll feel like you've done silly mistakes. So yeah, question number 17. This we've not discussed. So skill I'm gonna give you time, 1 minute, and answers in the chat. It's is all I want. यार कल तो बहुत लोग एक्टिव थे, बहुत लोग चैट कर रहे थे. Where are these like people now? I mean, why aren't you answering? Just for the record, मैं बता दूं कि हम 8 से 9 रोज लाइफ पे बायो के PYQs डिस्कस करते हैं. So the timings does not change and it's the same always, so you can look through it if you are interested. I mean, if you are giving your CUET exam in biology. And coming to this question, ये अगर तुमको याद हो, मैंने अभी अभी just बताया in the last question that, what did I tell? What did I tell? So abhi abhi in the last question I told you guys that nostoc and oscillatoria is a cyanobacteria. ठीक है, इसके साथ साथ और एक और साइनोबैक्टीरिया इज एनाबाइना. ठीक है, दिस इज आल्सो साइनोबैक्टीरिया. नाउ व्हाट इज ग्लोमस? तो हमें पता चलता है ग्लोमस इज द आंसर, बट व्हाट इज इट? तो बेसिकली जो ये जीनस होती है ना ग्लोमस की, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम माइकोरिजा विच इज अ फंगल सिम्बायंट इन दिस एसोसिएशन. एंड ये ना नाइट्रोजन के लिए काम नहीं करते. साइनोबैक्टीरिया दे वर्क फॉर नाइट्रोजन, बट दे ऑब्जर्व फॉस्फोरस. ठीक है, वो फॉस्फोरस सॉइल से ऑब्जर्व करते हैं. दे ट्रांसफर इट टू द प्लांट, दे ट्रांसपोर्ट इट टू द प्लांट, पासेस या व्हाटएवर. ठीक है, सो ग्लोमस इज फॉर फॉस्फोरस. पता नहीं क्यों मेरे को ग्लोमस और फॉस्फोरस एक साथ देखकर बहुत सेंस बनाता था, तो मुझे हमेशा याद रहता था. ग्लोमस इज फॉर फॉस्फोरस एंड इट्स अ जीनस ऑफ लाइक अ माइकोरिजा की, जो एक फंगल सिम्बायोट है. ठीक है. Now this is a question that we already did. Parthenogenesis does not occur in mammals. As easy as that. As simple as that. है ना? ये भी हमने कर लिया था, ये बहुत easy है. ये भी हमने करा था. Easy, easy. This we did. This also we did. This also we did. Wow. Let me see. Did I answer this? Oh, I did. Wow. मुझे wow. I did not expect that. Sorry. I did not expect that. हाँ, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. ये इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में. Identify the statements true for RNA. As this is a new question, I will give you some time. So you have 2 minutes. Answer this. क्योंकि इसका क्वेश्चन भी ABCD and DC वाला है.
You have to tell me which option number is the correct option. ये रहा, बताओ बताओ बताओ. चलो, let's solve this question now. um एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ, let's solve this question. It says RNA acts as a genetic material for some viruses. हमें बताना है correct options क्या है. It says RNA also functions as an adapter molecule. RNA has hexose sugar as its backbone. ठीक है, and RNA also acts catalyst in some cases. So let's eliminate. ठीक है, देखो D तो सही होगा ही होगा, right? Because it acts as a catalyst, no? rRNA क्या होता है ना? B भी सही होगा ही होगा, because अडाप्टर मॉलिक्यूल tRNA क्या होता है ना? तो हमें देखना है कि B और D किस में करेक्ट है. तो A1 में करेक्ट नहीं है, तो 1 इज द रॉन्ग ऑप्शन. 2 में करेक्ट है, B एंड D 3 में भी करेक्ट है, एंड 4 में करेक्ट नहीं है. तो 4 और 1 तो कट गया. नाउ वी हैव टू सी A सही है या फिर C सही है. So A says RNA acts as a genetic material for some viruses. It does. It does. Retroviruses, उसमें RNA होता है genetic material, है ना? C says RNA has a hexose sugar. Does it? Does it? क्या RNA में हेक्सोस शुगर होती है या पेंटोस शुगर होती है? RNA में हेक्सोस शुगर होती है या पेंटोस शुगर होती है? RNA में पेंटोस शुगर होती है. So answer is 2, and to the to confirm, the answer is 2 here as well. Got it? Right. Question number 26. This we already did. In DNA, N glycine, और ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ. ये मैंने 2 बार डिस्कस कर दिया है. इसका आंसर है नाइट्रोजन शुगर एंड पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर. आगे बढ़िए. ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर रहा था, ये नहीं किया था. ये बताओ. So it says identify the factor that does not affect the Hardy-Weinberg equilibrium. This you're gonna tell me. एंड आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी का आज हम एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद हम जेनेटिक्स में से कोई ले लेते हैं टॉपिक, है ना? या तो एवोल्यूशन या फिर डीएनए वाला. बता दो तुम लोगों को कौन सा करना है. अगर लाइव हो तो लाइव चैट पे लिख दो, अगर रिकॉर्ड देख रहे हो तो कमेंट कर दो. ठीक है, बता दो कौन सा करना है. उसके बाद हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है वो उसी में आ जाएगा.
अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आई एम गोना गिव यू टाइम अगेन, तो बताओ क्या है इसका आंसर। तो आंसर आया, आंसर क्या है, आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर। मेरे हिसाब से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम सेज कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स इन एन इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा तब भी चेंज होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा मतलब अगेन एलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का कैसे इफेक्ट कर सकता है, जबकि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, राइट। सो द आंसर इज 4 एंड लेट्स चेक, द आंसर इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ये हमने कल किया था, तो इसका आंसर जल्दी से मैं बता देती हूँ। सॉरी। हाँ, तो हमने कल किया था, इसका आंसर मैं जल्दी से बता देती हूँ। इसका आंसर इज नीमाटोड्स, 3 नीमाटोड्स। इट्स रिटन इन द एप्लीकेशन चैप्टर। इसका भी हमने कर लिया था, इसका आंसर इज मूंगबीन। दिस आल्सो वी डिड, दिस आल्सो वी डिड, दिस वी डिड, दिस आल्सो वी डिड। इवन आई वांट टू सी कि मैंने आंसर किया है, आई डोंट नो। दिस वी डिड। इवन आई एम ऑल्सो शॉक्ड बाय द फैक्ट कि एक और है जिसकी आंसर शीट हमें दी गई थी, है ना, एंड उसकी भी ऑलमोस्ट सेम है पूरी। ओके, सो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, तो ये हम लास्ट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम बायोटेक पढ़ने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 ऑन योर स्क्रीन्स, इट सेज मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये लिस्ट 1 कह रही है राइबोसोम्स, हिस्टोन, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। लिस्ट 2 says replication, transcription, translation and nucleosome। वेरी इजी, बट सिंस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट देती हूँ, आप लोगों को करो, ठीक है। आई नीड द करेक्ट ऑप्शन।
Yes, so let's solve this. Ribosome, histone, मैंने I've always told you कि हमेशा we will start with the easiest thing. तो मेरे को यहाँ पे सबसे easy चीज़ लग रही है histone को settle करना. तो मैं histone को nucleosome से settle करना चाहती हूँ. I want to do B का 4, which makes the answer 4 correct. ठीक है, but still I will check. Ribosome translation में काम आता है, right? rRNA सॉरी, हाँ, rRNA एंड tRNA अडेप्टर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन करवाते हैं, है ना. ट्रांसलेशन इज RNA टू प्रोटीन, तो उसमें राइबोसोम काम आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम. सो ए इज करेक्ट. बी ऑलरेडी चेक कर लिया. सी, DNA पॉलीमरेज शुड कम इन रेप्लिकेशन, तो सी का 1 है. RNA पॉलीमरेज शुड कम इन ट्रांसक्रिप्शन, तो सी डी का 2 है. So the option is 4 and the option is 4 here as well. So we've checked this question, इसका आंसर सही है. Now this is some more questions, है ना. ये वाले हम कल करेंगे. Like I said, I'm gonna show you how does the chemistry का looks, chemistry का chem का CUET paper looks. So it's like this. And मुझे honestly chem का paper देख के बहुत टेंशन हुई थी, पता नहीं क्यों. बस इतने सारे स्ट्रक्चर्स देख के मैं घबरा गई थी उस टाइम पे. चलो अब हम बायोटेक पढ़ेंगे, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो उसके लिए 53 हो रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक. 55 पे वापस स्टार्ट करते हैं. मेरे को PDF खोलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. सो यस, गॉट द PDF. 55 भी हो गए. चलो फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी. एक बार मुझे बस ऑडियो चेक करने दो, सही आ रही है ना. तो यस, सही आ रही है. पेन किधर गया? नहीं मिल रहा. चलो, वो पेन से लिखना भी मुश्किल ही था वैसे. मिल गया.
बट मुश्किल तो था ही सर। ठीक है, तो ना हमने कल बायोटेक्नोलॉजी किया था इंट्रोडक्शन, और उसमें ना हमारा डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग रह गया था। बट डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीम में नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि देखो इसके इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा थोड़ा उसका आ जाता है, थोड़ा थोड़ा इट कम्स, एंड उतना रिविजन करवा रही हूँ। Yep. So it says biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals. Right? Do we all agree with it? And this large scale production is what is known as upstreaming. Okay? And downstreaming is basically purifying that, refining that, uh, and उसका testing करना. जैसे चलो दिखाती हूँ लास्ट पेज में क्या लिखा है। डाउनस्ट्रीमिंग में बेसिकली, इफ यू गाइस कैन सी, ब्लड आ रहा है ना अभी, लोड नहीं हुआ। वाओ, लोड ही नहीं हो रहा। एनीवे मैं बता रही थी डाउन स्ट्रीमिंग में प्योरीफाइंग होता है, उसकी केमिकल टेस्टिंग होती है कि अब मैंने एक ह्यूमिलिन बना तो दिया, इंसुलिन का ह्यूमन इंसुलिन का आर्टिफिशियल वर्जन, पर लेकिन क्या वो सही काम कर रहा है, तो वो टेस्टिंग उसमें आती है, प्योरिफिकेशन उसमें आता है ना। एंड अपस्ट्रीमिंग बेसिकली होता है कि इंडस्ट्रियल बड़े स्केल पे फार्मास्यूटिकल्स को प्रोड्यूस करना। सो इट हैपेंस इन बायोरिएक्टर्स। सो there are two types, sparged and stirred. Yeah, this was also in the book, एंड उसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि एक पीएच टेस्टर होता है, एक टेम्परेचर टेस्टर होता है, एक एक थिंग होती है जहाँ से आप यू कैन टेक आउट सम सैम्पल्स एंड चेक इफ दैट इज राइट, बिकॉज एक बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हो, छोटा सा सैम्पल निकाल के देख लेते हो, एंड देन यू पुट इट बैक, एंड एज यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन इन वो कर्ड वाले चैप्टर में, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में, कि इनोक्यूलम जैसी चीज डाली जाती है टू मेक दैट वर्क, राइट। एक सेकंड, मेरी वीडियो नहीं आ रही, ये मैंने नोटिस ही नहीं किया, सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, अब आ रही है। Yep, so that's downstreaming and that's upstreaming, right? So हम आगे बढ़ते हैं। Biotechnological applications in agriculture. So we have agrochemical based agriculture, we have organic agriculture, and we have genetically engineered crop based agriculture. तो GMOs बना के करते हैं, है ना? So GMOs is what? GMO is a genetically modified organism, right? GM plants have been useful in many ways, as we know कि जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट होता है ना, we do it for the desired traits, हम उसका क्रॉस करवाते हैं, बट उसके साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड ट्रेट्स भी आ जाती हैं। बट जीएम मॉडिफिकेशन में, sorry, genetically modified organism में there is only desirable traits, because हम सिर्फ desired जीन ही लेते हैं और desired जीन ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। So what have genetic modification done, has done? So they may make crop more tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt. They reduce or salinity के level, है ना। दे रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पेस्टिसाइड के आप जी नहीं डाल सकते, जैसे बीटी कॉटन है ना, वो जी नहीं डाल दिया अपने पेस्ट के लिए। हेल्प्ड इन रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, दे इंक्रीज efficiency of mineral usage by plants, and enhance nutritional value of food, that is like for example it's given vitamin A enriched rice. This process is known as biofortification. This process is known as biofortification, and it's in your strategies wala chapter, biofortification. ठीक है। So in addition to these uses, GM is used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels, and pharmaceuticals. Right? Now we've already learned about Bt toxin, ठीक है, which is produced by the bacterium called Bacillus thuringiensis. Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and have been expressed in plants.
to provide resistance to insects without the need for insecticides, in effect created biopesticides. So examples are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato and soyabean. ठीक है, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था. So where is that? एक तो आई थिंक बाद में आएगा. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटी टॉक्सिन एक्चुअली करता क्या है. सो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. व्हाट इज अ प्रोटॉक्सिन? सो व्हाट इज अ प्रो एंजाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन तो एंजाइम का जो इनएक्टिव वर्जन होता है ना, उसको हम प्रो एंजाइम कहते हैं. जो एंजाइम फंक्शनल एंजाइम से पहले जो चीज़ बनती है उसे प्रो एंजाइम कहते हैं. तो फंक्शनल टॉक्सिन which would be like an enzyme or a protein, उससे पहले जो चीज़ बनती है उसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं. तो जब इंसेक्ट से इनजेस्ट करता है, तो इनजेस्ट करने के बाद जो पेस्ट का गट होता है वो अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता, अल्कलाइन होता है. एंड विच solubilizes the crystals and activate the toxin, binds to the surface of the mid-gut epithelial cells and what they do, perforation करता है. एज अ रिजल्ट सेल स्वेल हो जाता है और उसके बाद डेथ हो जाती है, लाइसिस हो जाता है. ठीक है, दैट हैपेंस. एंड इट्स अवेलेबल फॉर लेपिडोप्टेरन्स, tobacco bollworm, orbitworm, beetles, dipterans, Bacillus thuringiensis forms crystals during a particular phase of their growth. ये हमने पहली बात कर दी. And it contains an intersecticidal protein. जैसे मैंने पहले बोला प्रोटीन होता है. ठीक है. Now it says कि several crop में होता है, ये insect group specific होते हैं. This is also very important. And gene का नाम होता है cry. अब हम बात करते हैं proteins encoded by cry1AC and cry2AB control cotton bollworm, and cry1AB controls corn borer. ये तुम याद कर लेना. अब ये कैसे रटोगे मुझे नहीं पता. चलो एक ट्रिक देने की कोशिश करती हूँ. cry1AC like 1 है, A है एंड C है, एंड देन 2 है, A है एंड B है. ये बहुत गंदी ट्रिक है एंड मुझे नहीं पता कितनी हेल्पफुल होगी, बट मैंने ऐसे याद किया था. ठीक है, तो समटाइम्स गंदी ट्रिक्स ऑल्सो वर्क. एंड दिस क्वेश्चन केम इन द PYQ, सो वी कैन नॉट मिस दिस एग्जैक्टली कि cry1AC cry1AB का क्या सीन है. तो आप 1 को लेट्स गिव इट अ नंबर 1. ए को 1 मानते हैं क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट है, और सी को हम मानते हैं 3. ठीक है. अब 2 को हम 2 मानते हैं, ए को हम अगेन 1 मानते हैं, 2 को 2 मानते हैं, ये 2 लिखा है, ए को अगेन 1 मानते हैं और बी को मानते हैं 2. तो इसका टोटल कम्स आउट टू बी 5. आई नो बहुत बुरी ट्रिक है. एंड इसका टोटल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 5, whereas cry1AB 1 is 1 again, plus A is 1 again, plus B is 2, so it comes out to be 4. ठीक है. एंड कॉर्न में 4 लेटर्स हैं, सो cry1AB से इसका होगा. एंड कॉटन बॉलवॉर्म में आप कॉटन में 5 है, वॉर्म्स देखो लास्ट का, इट्स 5, सो इसका टोटल 5 होगा. आई नो बहुत गंदी ट्रिक है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है. सो RNA इंटरफेरेंस का मेथड हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें डिस्कस कर ही लिया था, बट हम फिर से एक बार कर लेते हैं फटाफट. सो several nematode species parasites a wide variety of plants and animals including human beings. So a nematode, Melodyne incognitia. This you'll have to remember, very important. The name of the nematode. This affects the tobacco की root. ठीक है. And they happen to be like they do great reduction to the tobacco का yield. So RNA interference, RNAi is a method that is used. तो इसमें क्या करते हैं ना कि हम साइलेंस कर लेते हैं mRNA को. इसका बेसिकली टेक्निक ये है कि mRNA होगा, mRNA देखो DNA में जीन होती है, उसके बाद वो RNA बनता है और उसके बाद वो प्रोटीन बनता है एंड प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, सॉरी ये पी है, प्रोटीन एक्सप्रेस करता है.
तो अगर हम इस स्टेज में उसको रोक दें, दिस इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। तो एक एमआरएनए होगा जो जाके ये बनाएगा प्रोटीन, है ना, तो हम उसको साइलेंस कर दें। साइलेंस कर दें मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, अगर हम उसको बाइंड कर दें मतलब डबल स्ट्रैंडेड बना दें, स्टैंडर्ड बना दें, तो वो आरएनए साइलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। तो ट्रांसलेशन इज आरएनए टू प्रोटीन, this is mRNA silencing. The source of this complementary RNA could be an infection by virus having RNA genomes or mobile genetic elements, transposons. Very important, transposons. Using agrobacterium vectors, nematode-specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA, और उससे वो साइलेंस हो जाता था। एंड इसका ना बहुत वाइड प्रोसीजर होता है और इसकी ना बीच में स्प्लाइसिंग भी होती है सब। उसके लिए इफ यू वांट ना कुछ एनिमेशन वीडियो होगी यूट्यूब पे, वो देख लेना, ठीक है। वो वैसे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बुक में नहीं है, तो ये मोटा मोटा समझ लो होता क्या कॉन्सेप्ट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। सो बेसिकली क्या करते हैं कि चेन ए बनाते हैं अलग से, ए पेप्टाइड अलग से बनाते हैं, बी पेप्टाइड अलग से बनाते हैं। देखो एक सी पेप्टाइड भी होती है बट वो मिच्योर एंजाइम में नहीं होती, तो वो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड को मिलाते हैं एंड उससे हम वो बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। नाउ ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। किसने किया था? एलिले ने किया था। एंड ए बी चेन्स बना के प्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, एंड चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और एक और इम्पोर्टेंट है कि कितनी पेप्टाइड होती है टोटल, वो किधर है? मिल नहीं रहा इसमें, आई थिंक इसमें लिखा नहीं है बुक में। तुम्हारी बुक्स में हो तो एक बार उसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। नाउ जीन थेरेपी, व्हाट इज जीन थेरेपी? सो ये भी एक बार देख लेना कि 1919 में फर्स्ट जीन थेरेपी हुई थी एक लड़की पे जिसको था एडिनोसाइन डायमाइनेज एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है, इसके लिए हुआ था। So this enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine diamine. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches is that they are not completely curative, right? So, हमारा gene therapy is completely curative. So, functional aDNA का cDNA using retroviral vector is introduced in the lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from marrow cells producing AD is introduced in the cell, the in early embryonic stage, it is a permanent cure. So basically क्या कह रहा है कि lymphocytes में हम एक cDNA डाल देंगे, रेट्रोवायरस लेंगे, सॉरी वेट, रेट्रोवायरस लेंगे, रेट्रोवायरस के पास होगा आरएनए, है ना, वो बनाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विच इज अ सी डीएनए, है ना, वो करेगा रेप्लिकेट रेट्रोवायरस में, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्रोसीजर होगा। उसके बाद ये कह रहा है लिम्फोसाइट्स इमोर्टल होते हैं, राइट, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें पीरियोडिकली डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर लेते हैं, अगर हम इसे इस जीन थेरेपी को, तो हमें इतनी देर नहीं करना पड़ेगा बिकॉज वो लिम्फोसाइट्स की समझ रहे, जेनेटिकली जीन इंजीनियर हो जाएगी, जीन चली जाएगी उसके पास। अभी डीएनए डाल रहे हैं पर लिम्फोसाइट्स इमोर्टल होते हैं, बट अगर जीन में चला गया at embryonic stages, that can only be done at that time and marrow cells में, so then that can be a permanent cure. Now we have molecular diagnosis में भी हमारे पास है ELISA, जो कि होता है एड्स का टेस्ट, है ना। वी हैव पीसीआर, वी हैव आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड वी हैव पीसीआर व्हिच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड दिस सर्व्स एज अर्ली डीएनए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बाद में बता देना या कमेंट कर देना या लाइव चैट में बता देना। अभी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा जो बहुत मुश्किल हो। दिस इज अगेन देन इम्पॉर्टेंट एनिमल्स वाला,
एंड बस एथिकल इश्यूज, वाओ वी आर अबाउट टू एंड दिस। एंड दिस इज ऑल्सो मतलब जिन एनिमल्स का डीएनए मैन्युपुलेटेड होता है उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं, पहले तो ये बात ठीक है। फिर उसके बाद हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम का फंक्शनिंग आप देख रहे हो, या कुछ मान लो ए एंजाइम डाले उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा वैसा कुछ देख रहे हो। स्टडी ऑफ डिजीजेस देख सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि क्या होता है, जैसे ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, DNA genes which codes for particular products such as human protein, which is alpha 1 antitrypsin, which is used to treat emphysema. This is very important, very, very important. ठीक है. Similar cases for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. ठीक है. And this, चलो ये तो फिर भी ठीक है, but एक बहुत बहुत important topic जो है हमारा, in 1997 the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk. The milk contained human alpha lactalbumin, which was nutritionally a more balanced product for human babies and natural cow milk. This is very very important, ये रट लो, मैं रटवा नहीं सकती इसलिए मैं बोल रही हूँ रट लो। ठीक है, मतलब ये सारी कुछ चीजें जो स्किप करी ना वो रटने वाली थी, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन टेस्ट करते करते हैं ना। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग लाइक कॉस्मेटिक्स एंड किसी प्रोडक्ट का टेस्ट करना वैसा। नाउ एथिकल इश्यूज, देखो हम एनिमल्स को हार्म करें उसके लिए एथिकल इशू हो सकता है, राइट। वी आर मॉडिफाइंग इट एंड उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो बहुत ही डिस्ट्रॉय करता हो, लाइक इट्स लाइक अ बायो वेपन, वो बहुत ज़्यादा अनएथिकल है ना। सो देयर इज इंडियन गवर्नमेंट की एक कमेटी विच इज GEAC, विच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो GMOs को वैलिडेट करता है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एंड इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बायोपायरेसी, इस पे क्वेश्चन भी था, ठीक है। इसमें का बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है ये राइस, बासमती राइस वाला। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो बासमती कह रही हूँ बायोपायरेसी, ठीक है। एंड देन पेटेंटिंग, व्हाट इज पेटेंटिंग, पेटेंट ले लेते हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल गिवन, वेर इज इट, ये रहा टर्मरिक नीम एंड कर्क्यूमिन के बारे में I can't really find curcumin यहाँ पे क्या लिखा है, बट इस पेज में है। एंड दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड ये है एक इम्पॉर्टेंट इंडियन पेटेंट्स बिल, दिस जस्ट अंडरलाइन दिस, ठीक है। एंड मैंने आई हैव टोल्ड यू बायोटेक वाला चैप्टर जब हम कर रहे थे कि पहला पेज पढ़ो, है ना, वो स्टार्टिंग पेज था उसका यूनिट का, वो पढ़ो। बट ऑल्सो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, समरी, ठीक है। तो ये समरी कल पढ़ना, ठीक है। एंड पढ़ के आना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ये है देखो, अल्जाइमर्स के बारे में लिखा है, जीन थेरेपी के बारे में लिखा है, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आ सकती है एग्जाम में, नॉट किडिंग, आ सकती, ठीक है। सो डू दिस, एंड विद दैट we have almost reached the end of the session, क्योंकि हमने बायोटेक कर लिया है। So at the end I would like to say thank you very much for being patient, and I hope you guys enjoyed and learned something, and आपको tips मिली हो अच्छी which will help you guys also। um, do check out the website of ExamFactor, right? And check out their mock tests and crash courses. They are very very helpful, and you need practice and revision. And time बहुत ज़्यादा हो गया, 9:15 हो गए, 9 तक का टाइम होता है, तो let's just meet tomorrow. Tomorrow session would probably be recorded, live नहीं होगा, ठीक है। So thank you and bye bye, and a very 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 all the best for your CUET exam.